हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर आपने लार्जेस्ट एलिमेंट को किस तरह से प्रिंट करें अरे के थ्रू यहाँ पर हमने देखा। सो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर है क्वेश्चन? क्वेश्चन, यस, हियर इज द क्वेश्चंस। राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन प्राइम नंबर। तो ठीक है, आप कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर बढ़ूंगा। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। ये भी आप कर लोगे, एक्सेप्ट करेगा। एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब होता है इस तरह से, यानी इसका रिवर्स भी करोगे तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, मगर ये हमें अभी तक हम स्ट्रिंग की तरफ नहीं बढ़े, तो उसके बाद में नहीं देखेंगे। राइट अ फंक्शन दैट फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सम ऑफ डिजिट्स वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, और वो एज इट इज यहाँ पर आपको यूज करना है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ मैट्रिक्स ऑफ टू डायमेंशनल अरे एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। देखो, हाउ टू ट्रांसफर। अभी ये यहाँ पर जीसीडी, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस तरह से आता है। ठीक है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। चलो बढ़ते हैं। और राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू डायमेंशनल अरे एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट। चलो कर लेता है। लेट्स ट्रांस चलो लेट्स क्रिएट वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Right click on a package, new, and here is the class. And problem underscore 04. And here is the paste. Okay. Let's see from here. I just, I think इसको भी नीचे ही लेना चाहिए था. Sum of all elements. Control X. Okay, done. Main and write a function that takes the matrix of two-dimensional array. So two-dimensional array यहाँ पर लिखूंगा int num, it's just a normal number, num of array, a num of underscore ar array, square bracket of a square bracket equals to curly braces, ending curly braces, semicolon, and then here is the one curly braces, and after that there is also one same curly braces here. Lights inside 2 comma 3 comma 4, and same as it is. I just want to print 5 6 7. It's, I think it's a very big number. Okay, okay, no, that doesn't matter. I just okay, one 1 and 1. Okay, here is the 3 by 2 matrix or 2 by 3 matrix. After that, mm, int sorry, I just transfer to the function like static. Here is the return type of integer, sum of integers. Then int uh, sum of int, sum of all number, sum of, sum of, just a sum of int of array को ये just accept करने वाला है. But when you write it like this, okay, sorry, that's my mistake. Control X. No, there is not my mistake. Static int sum of integer. Okay. Here is the 3 by 2. Okay. I just didn't mention variable name. So here is the variable name as num. Okay. And then return 0 by initially. Hmm? Don't worry. And then
I just write here like sum of num of array and then done. Okay, no problem. But actually, we didn't know the length of array. Okay, doesn't matter. But I just want to write here uh, like this. Sysout, sysout num dot length. I just want to print. So right click, run as a Java application. So you can now it's just a row 2 by 3 matrix and there is 2 rows, and after that length of 0th index I just want to print here like this. So you can now check it out, run as it's just a 3 number. Okay, so we know about the overall things which is here. So let's continue. I think I just want to use for each loop. So you can more practice on a for each loop, no problem. So here is the for of int of first dimension array as a uh, row, just a row, and inside the num. After that, I just want to write one row of one for once again, and here is the int of just a number number colon of row. Okay, and then I just want to add this some data. So sum equals to 0 initially, and then here sum equals to number number plus sum. Okay, plus sum. Okay, and I just want to return here is the sum. Okay, and then accept this data in an integer format of result, and after that I just want to print the overall data sysout, and inside sysout I just want to write sum of all element is colon plus operator, and here is the result. Done. Okay, not a big deal. So right click, run as run on server. Now you can write check the result overall data. It's a 12. It's just right. 1 plus 1 plus 1 equals to 3. 3 plus 2 equals to 5. 5 plus 3 equals to 8. 8 plus 4 equals to 12. And now it's good. Okay. If I didn't write like this, and just I mentioned one data, and its value is 2 plus 3 equals to 5 plus 4 equals to 9. So right click, run as, and run on serve Java application. Then it's equals to 9. तो यहाँ पर हमने एडिशन किस तरह से किया जाए, टू टू डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है. सो मेक श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आ जाएगी. तो इतना बड़ी बात नहीं है आपको किस तरह से डेटा को एक्सेप्ट करना है. मैंने यहाँ पर विदाउट फॉर लूप, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसको नहीं यूज किया है. यहाँ पर फॉर ईच लूप को डायरेक्टली यूज किया है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया है. तो यही सेम क्वेश्चन मैंने जब यूज किया था वहां पर नॉर्मल फॉर लूप यूज किया था मे बी. सो मेक श्योर वो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इसका भी वीडियो देखोगे तो आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो डजेंट मैटर कि आपको यानी फॉर लूप के अंदर वही कंसेप्ट यानी मैं दोबारा लूँ यानी फंक्शन के अंदर, बट इसके अंदर आपको प्रैक्टिस हो गई होगी. तो मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नया कुछ तो लाके देखेंगे, एंड डू प्रैक्टिस. जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. सो टाटा बाय बाय. प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो. सी यू गाइज.